नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद पंपिंग लेमा फॉर CFL. तो जैसे हमने पंपिंग लेमा फॉर RL किया था, सेम वैसे है, ओनली माइनर चेंजेस है. अगेन ओवर हियर विल बी प्रूविंग इट विद कॉन्ट्राडिक्शन, यानी जो हम assumptions लेते हैं कि A हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ही मानेंगे, तो it will be having a pumping length P. Then we'll select a string S such that the length of S should be greater than or equals to P. तो लास्ट रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया था, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्स वाई एंड जेड. ओवर हियर हम क्या करेंगे, एस को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यू वी एक्स वाई एंड जेड. बाकी के जो रूल्स है, लास्ट इसमें हमने देखा था एक्स वाई रेज टू आई जेड शुड बी इन ए, ओनली देन वी कैन से दैट इट इज अ CFL. यहाँ पे हम क्या करेंगे, u v रेज टू आई x y रेज टू आई z. इसको प्रूव करेंगे कि ये ऐसा करने के बाद भी जो ये स्ट्रिंग है दैट विल बी इन a. Rest all the rules are same if you see. So without doing any delay, we'll start with the examples over here. Yeah, the first example says that show that L is equals to A raised to N, B raised to N, C raised to N, where N is greater than equals to 0 is not a context free language. मतलब ये प्रूव करना है that ये जो गिवन लैंग्वेज है वो CFG नहीं है या CFL नहीं है. So, the language over here is, it says जितना number of A's है उतना ही number of B's and उतना ही number of C's होना चाहिए. So in short what we are telling is number of A's is should be equal to number of B's and should be equal to number of C's. So first step is, let us assume that the given language is context free. So if it is context free, then it can be pumped. Pumped matlab it can be repeated and still follow or say satisfy each and every rule. So because we are assuming that it is context free, it is having a pumping length say P. Now we take a string S such that S is A raised to P, B raised to P and C raised to P. यानी हम एक pumping length लेंगे. For example यहाँ पे मैंने pumping length 4 लिया है, तो हम उसी में से अभी एक string बनाएंगे. क्योंकि मैंने pumping length 4 लिया है, तो यहाँ पे A raised to 4, B raised to 4 and C raised to 4 आएगा. So the string will be like 4 A's, 4 B's and 4 C's. So हम बहुत सारे cases consider करते हैं. So cases will be considering over first is where V and Y each contain only one type of symbol. यानी मैंने ऐसे डिवाइड किया है पहले इसमें, जहाँ पे V में एक ही टाइप का सिंबल हो और Y में भी एक ही टाइप का सिंबल हो, मिक्सचर ना हो. So as we know that we are dividing here S here into 5 parts. So मैंने एक सिंबल लिया, ये पार्ट है U, ये दोनों पार्ट है V, ये पूरा पार्ट है X, this is Y and this is Z. Now, the way we did in RL, similarly, we'll take over here this equation where I'm taking the value for I is equals to 2. तो यहाँ पे ये v square y square हो जाएगा क्योंकि I का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया है. तो u, writing this equation in this form, we have u as a, v का वैल्यू है a and a, तो a और a लिखा है. But because it is v square, as we have taken I का value as 2, so we have to repeat it 2 more times for v. So a लिखने के बाद a 2 बार और repeat होगा v का. Then we'll write x as a, 4 v's and c. So x का value is a, 4 v's and c. Next y का value is c, but again over here y square है, so एक बार c लिखा तो दूसरा c repeat होगा, and ये जो last के दो c है that is for z. So now if you check, total number of A's over here is 6, P is 4 and C is 5. So here it is very clear, it is giving itself a proof that the given language does not belong to L, because the language L says that A, B or C, there should be equal numbers in any given string. And over here it is clearly proven that it is not equal. Hence we say that the above string is not context free. So for that first case. Similarly, you can have one more case where we are trying to prove that B and Y, अगर हम एक combination of symbols भी लेते हैं, then still it is not context free. So again, you will make like divide it into parts the way you want. I का value हमने 2 लिया है, so writing this entire equation in that form, we see that यहाँ पे ABB repeat हो रहा है, which is not allowed because the string says it should be A's followed by B's followed by C's, having all of them in equal numbers. So this actually is violating the rule, which is not correct, and it is again contradiction to our assumption. So because of these two cases, we prove that the given language is not context free.
सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल देखा है विच सेज द लैंग्वेज WW विच मीन्स जितना फर्स्ट हाफ रहेगा वैसा ही सेकेंड हाफ होना चाहिए इन द सिंबल्स ऑफ 0 and 1. सो लाइक से 0 1 है तो सेकेंड हाफ भी 0 1 होना चाहिए. अगर फर्स्ट हाफ 0 0 1 है तो सेकेंड हाफ भी 0 0 1 होना चाहिए. So W following W means first half following the second half. So again over here we have taken the grammar assumption as context free. एक pumping length लिया हुआ है 5. So 0 5 1 5. अगर पहला ऐसा है तो दूसरा पार्ट भी ऐसा ही होगा that 0 is 5 and 1 is also 5. So 5 zeros 5 ones, again 5 zeros and 5 ones. So divide this into 5 parts. जहाँ पे we have taken I का वैल्यू एज 2. सो u v स्क्वायर x y स्क्वायर z फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे दिखता है 0 raised to 5 1 raised to 7. सो नेक्स्ट पार्ट इज 0 5 and 1 5 विच इज नॉट अलाउड क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि 0 5 है एंड देर आर 7 ones, then second half में भी ऐसा ही होना चाहिए, but this is not following the rule, violating the rule. Hence we say that the given string does not belong to the language. Similarly यहाँ पे केस 2 में दिया है this is just the title you give. You can divide it into any number or any form you want. तो यहाँ पे जो मैंने डिवीजन लिया है वो b का वैल्यू इज 0, x का वैल्यू इज 0 and y का वैल्यू इज 1 over here. Oh sorry, b का वैल्यू इज 0 0, x का वैल्यू इज 1 and y का वैल्यू इज 1 1 over here. So again in that case if you see 0 raised to 7 1 raised to 7 ये दोनों सेम आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट हाफ में 0 is 5 1 is also 5 which is not allowed क्योंकि जितना नंबर ऑफ zeros and फर्स्ट हाफ में आता है उतना ही नंबर ऑफ zeros and 1 सेकेंड हाफ में भी आना चाहिए. Hence we say that the string does not belong to the given grammar and it is also a contradiction to our assumption because it is not satisfying any rule. We say that the string cannot be found, which means it is not in the context-free language. So this was all about context-free grammar. This completes the chapter for it. ये टॉपिक मैंने थोड़ा फास्ट इसके लिए किया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका सिमिलर वे ऑफ सॉल्यूशंस आरएल में देखा है. सो आई एम होपिंग दैट एवरीवन रिमेंबर्स इट एंड एवरीवन हैज अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट. Still in case of doubts and difficulties, please let me know.